Everyone, welcome back to the Legal B channel. Today we have a very special guest with us. His name is Divyam and he has recently cleared NICL AO exam 2025 in the legal discipline. Hi Divyam, how are you doing? Hello, ma'am. I'm good. Thank you for asking. Divyam, how was your experience giving NICL AO exam? Ma'am, actually, given the pattern of NICL and given the vacancies, that is only 20, first it was like impossible to achieve at that during that time when notification was released. But gradually, when I went through prelims, mains, it was a great learning experience for me, and it was good. So firstly, before we dive into, the information as to and your experience and expertise with NICL AO that the future students and aspirants can learn from, I would firstly like to congratulate you on this huge success, right? This is a Thank you so biggest much, ma'am. milestone, and I'm sure that you're going to achieve great heights in the future as well. Starting off with the experience, tell me how was the NICL legal exam? Tell me a little bit about your profile first, your background. Ma'am, I hail from a district, Munger district in Bihar. I have done my schooling from my home district only, and I have graduated in 5 years law from Faculty of Law, Banaras Hindu University in 2023. Then I joined Tata AIG General Insurance as a management trainee, and now I'm working with Sriram General Insurance as a senior executive in legal department only. So when you were preparing for this exam, you were a working professional throughout, or did you take like a leave of a few months for as a Mm, preparatory leave for this exam? After my first job, Tata AIG, I took a drop near about 1 year because in beginning of my college and after graduating, I was inclined toward judiciary preparation because all law student graduate first preference is go for judiciary. And in Tata AIG, it was not feasible and not manageable to study vast subjects like judiciary, which demands and your work profile. Hmm. Therefore, I took near about 10 to 12 months gap, and I gave IBPS SO Law Officer because in 2024 it was a great opportunity. But unfortunately, I missed barely by 1.23 marks in final selection. And then we have the Supreme Court judgment on judiciary, Correct. which have मतलब रेड लाइन ही हो गया है. So Hmm. therefore, and then in May, I decided to rejoin organization so that so that my preparation and my financial stability go in hand. So, see, I had a lot of conversations with students, and I think a lot of people who are sitting for these exams, they are also working professionals. They're working either as litigants or, in a corporate firm or, with a corporate sector. It could also be a PSU. A lot of these people are changing jobs from, one PSU to another PSU. सबको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है कि आप जॉब के साथ में प्रिपेयर कर रहे हो, और शायद है भी क्योंकि आपको जॉब भी मैनेज करना है और आपको प्रेपरेशन भी मैनेज करना है एग्जाम के साथ में। आपका क्या एक्सपीरियंस था एंड हाउ डिड यू मैनेज बोथ ऑफ दीज एस्पेक्ट्स? मैम एक्चुअली मैंने अपनी पुरानी वाली गलतियों से सीखा व्हेन आई वाज इन टाटा एआईजी. व्हेन यू आर इन जॉब, यू आप चले जाते हो इन योर कंफर्ट जोन. हम्म। And the most prominent thing is your consistency. करेक्ट। आपको लगेगा कि you should have 8 hours 9 hours with you per day or in a weekend. No, if you are going for 2 to 3 days only per day but every day on in your week, then you will edge you have edge from other candidates because the competitive exams not demand lot of knowledge with you. It करेक्ट। demands strategy and smart work and the consistency, the most prominent one. And when I joined Sriram General Insurance in May, there was no notification as such of NICL. हम्म। And in NICL, it was released in probably in June करेक्ट। because the paper was in July. करेक्ट। And in during my preparation, I used to manage my work and studies by giving a planning. I used to make sheets regarding किस किस सब्जेक्ट को मुझे कितने घंटे देने हैं और किसे कब करना है.
जैसे in current affair, you can manage it when you are going to office in Correct. bus or train. Correct. In legal vocab and other, you can also manage through YouTube videos while you are Correct. in offices. And after offices, yeah, I used to practice math and reasoning. Hmm. So, So you can if you are consistent with your approach and motivated from your inside, not from other sources, then you can do it. so if I I were would to say. conclude your answer, you would have, I mean, like you said, I think I am also a very big on, that consistency is what matters in a competitive exam the most. आप कुछ भी कर लो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क की जरूरत है, और एक राइट स्ट्रैटेजी की जरूरत है, जो शायद इट सॉर्ट ऑफ डिफर्स एंड वैरीज फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन। आपका स्ट्रैटेजी मेरे पे नहीं लग सकता, मेरा स्ट्रैटेजी कोई थर्ड पर्सन Yes, नहीं ले सकता। सबकी स्ट्रैटेजी इंडिविजुअली डिफर करती है, और वो करनी yes, भी ma'am. चाहिए। I have seen a lot of students blindly following, टाइम टेबल्स ऑफ अदर पीपल, कि उसने ऐसे पढ़ाई करी थी, वो निकल गया, तो शायद मैं भी वो टाइम टेबल फॉलो करूं तो निकल जाऊं। So, if I were to conclude your answer, like you said, कि consistency important है, smart work important है, और strategy important है. And at the same time, additionally, you said that it does not matter that you're studying 8 hours every day, because it's not manageable with, your job. But Yes, what ma'am. matters is that you're studying every day for 2 to 3 hours at least. And then you could have a few days in a week जहाँ पर वो 8 घंटा 9 घंटा भी पढ़ाई हो पा हाँ, रही है। in ये Saturday Sunday weekend you get. तो जैसे दिव्यम, हाउ वाज योर अंडरस्टैंडिंग विद रिविजन? मतलब सी, planning a job and then Saturday Sundays was when you were giving your entire time to, of course, learning a lot of content, and of course 8 to 9 hours you're devoting on weekends, because possibly that is the only time that you can devote to, studying for such long hours, क्योंकि work days पे तो आप 2 या 3 घंटा ही निकाल पा रहे थे। Yes. So, how did you take out time for revision? Because this is also my understanding that without revision, you will never be able to retain what you have covered. Yes, ma'am. And especially law subjects where you Correct. have vast syllabus and all. हाँ. Actually, I was my foundation and basic was clear during my IBPS SO preparation and judiciary preparation. What I told earlier. Hmm. But in revision part, I honestly say that I am enrolled with Mega B Legal since May, Right. and the summary sheets which are provided by Mega B Legal courses Correct. is genuinely uh, मुझे मतलब हेल्प प्रोवाइड किया उसने टू राइट स्ट्रेटेजी। और मतलब लॉ में आपका ये होता है कि बहुत सारे प्रोविजंस हैं एंड यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम। And if you have someone like I exam B courses and other, I don't want to go in other courses, कि आपको वो एक तरह से रेडीमेड परोस के दे रहा है कि दैट यू Correct. शुड रिवाइज दीज ओनली Hmm. टू एमसीक्यू प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली, देन यू शुड। तो मैंने लीगल समरी सीट्स की हेल्प ली, और जो प्रोविजंस मैंने जो खुद के नोट्स बनाए थे कि जो वन लाइनर नोट्स, तो मैं उसे आई वाज गोइंग थ्रू दैट आफ्टर ऑफिस आवर्स, कभी कभी ऑफिस में भी। तो जैसे जैसे आपको टाइम मिलता था, यू यूज टू टेक आउट दैट हाँ, लिटिल यूज टाइम टू। फॉर रिविजन। हाँ, और मैंने लॉ सब्जेक्ट्स की वीकली एक शेड्यूल बनाई थी कि मैं मुझे ये वाले लॉ इस वीक में कवर कर देने विथ रिवीजन एंड एमसीक्यू। और लास्ट के वीक मैंने रखा था ओनली फॉर रिवीजन ऑफ थ्रू एमसीक्यू प्रैक्टिस। Correct. So I think yes, that is also one way to manage your time. But I'm sure that it would still be a little bit challenging with a job. बोलना बहुत आसान यस है मैम। और उसके बारे में बात करना बहुत आसान है, लेकिन जब कोई करने लगता है, then it becomes a little, difficult thing to do. हाँ, And क्योंकि मैम 8 घंटे ऑफिस के बाद आने के बाद आप नहीं यू बचता है डोंट आप में हैव एनर्जी। कर। I हाँ। agree. I agree. And I also think that it's a huge thing to do and to be able to achieve with a job. आसान यस चीज मैम। नहीं है। I wanted to ask you, how long did your entire journey when it comes to NICL legal exam, what was that total time period that you have devoted, like in terms of months, कितना महीना आपको लगा to cover that syllabus and to actually be prepared for NICL legal? आपने कितने टाइम में कवर कर लिया था syllabus? To be honest, regarding my law subjects, I was prepared with my basics and other laws, or NICL specific laws, consumer protection and motor vehicle act. I was Correct. going through in my office day to day because I'm with I same sector. Correct.
तो द मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा fear I was in math because law student you know I avoid to solve mathematics and the last time I used to solve competitive mathematics during my CLAT way back 6 years. करेक्ट। And in IBPS SO there was only reasoning part apart from English and law. But इसमें you have math. So I started preparing for math after notification was released in June. Oh, Yes, so you ma'am. just had 1 month to prepare for maths. Yes, ma'am. One month that too I shifted from Delhi to Raipur for my job in Sri Ram General Insurance and barely 15 days I had with me. So then I shortlisted the topics which were usually asked in pre क्योंकि pre में you have only to qualify not score as much to क्योंकि वो ऐड नहीं होते हैं आपके फाइनल मेरिट करेक्ट। में। हम्म। तो फिर मैंने आई एग्जाम भी तभी ले लिया था तो मैंने आई हैड कन्वर्सेशन विद वेदिका मैम। हम्म। तो मैं काफी उस समय थोड़ा टेंस था क्योंकि 15 दिन में हाउ वुड यू मैनेज टू करेक्ट। एक्सेल इन मैथ सो दैट यू पास योर कट ऑफ। So करेक्ट। Vedika ma'am suggested me some 4 to 5 topics that you should go in these 15 days so that you can manage to at least अपना कट ऑफ पार कर जाओ आप। करेक्ट। करेक्ट। तो 4 5 टॉपिक्स हैं तो मैंने उसे प्रिपेयर किया। बाकी इंग्लिश को मैम रोज आई वाज प्रैक्टिसिंग ऑन डेली बेसिस मॉक्स क्योंकि बेसिक्स तो क्लियर थे सारे एबीपीएस एसओ वाले। एंड रिगार्डिंग रीजनिंग में आई एम कंफर्टेबल बिकॉज आई एंजॉय सॉल्विंग रीजनिंग पजल्स एंड अदर थिंग्स। And after that you had 1 month and in your mains you have computer, you have करेक्ट। GK, you have English मतलब 5 subjects you have. So for GK I prefer free sources from YouTube and other things। उससे मेरा प्रिपरेशन हो गया। बाकी मोस्ट थिंग इज हाउ यू मैनेज योर मॉक्स हम्म। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन एंड हाउ यू एनालाइज मतलब आप अपनी गलतियों से कैसे सीखते हो कि व्हाट करेक्ट। नॉट टू रिपीट इन योर नेक्स्ट मॉक। How did you see that? What will you tell the watchers and how will the listeners who are listening to this particular interview of yours? What is that one suggestion या फिर advice जो आपने सीखा कि आप mocks कैसे analyze कर सकते हो? Because like you said, practicing mocks is one of the most defining parts of preparation of any competitive exams, not just legal, but no matter what stream you're sitting for, मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें जो आप मार्क्स लेकर आते हो और उनको एनालाइज करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस तो मैम। आप क्या करते थे? मैम टू बी ऑनेस्ट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग मॉक्स फॉर एनआईसीएल मेरे स्कोर मतलब कट ऑफ से भी ऊपर नहीं जा रही थी एंड आई वाज टेंस कि क्या होगा। तो देन आई स्टार्टेड एनालाइजिंग मॉक कि मैं कहाँ कहाँ बेसिक गलतियां कर रहा हूँ और कौन से क्वेश्चन मुझे वहां पे अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए थी करेक्ट। क्योंकि ऐसा नहीं कि यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू। यू हैव करेक्ट। टू स्ट्रेटेजाइज विच क्वेश्चन टू अटेम्प्ट। और कभी कभी ये होता है मॉक देते समय या रियल एग्जाम में आपको ईगो इशू आ जाते हैं थोड़े से ये मेरे से कैसे क्यों नहीं बनेगा। तो इस चीज को तभी अवॉइड करना है ड्यूरिंग योर मॉक पीरियड क्योंकि मुझे एटलीस्ट नंबर सबके नंबर बराबर बटे हुए हैं। तो आई यूज्ड इन प्री इन मेंस आप कौन सी सबसे बड़ी होती है कि कौन से सिली मिस्टेक आप कर रहे हो और उसको तब तुरंत जाके रिवाइज कर लो क्योंकि करेक्ट। आप गलतियों से ज्यादा याद होती है आपको स्पेशली इन लॉ सब्जेक्ट्स एंड इन जीके क्योंकि करेक्ट। जीके की सिलेबस वास्ट है करंट अफेयर की हम्म। कोई सा भी आपके सामने होगा तो अगर करेक्ट। आप उसको तभी रिवाइज कर ले तो एटलीस्ट 100 में से 1 2 क्वेश्चन तो आपके प्रिपेयर हो ही जाएंगे तभी। करेक्ट। सो लाइक यू सेड दिव्यम कि ठीक है आपने मॉक्स एनालाइज किया, आप मुझे बता रहे थे कि आपके लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट एंड विच आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग फॉर एनी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, पेपर वन ही उनके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है, स्पेशली कॉन्ट्स। तो आपने यस मुझे बताया कि आपने लास्ट का 1 महीना जो था आपने कॉन्ट्स को दिया, रीजनिंग को दिया, काइंड ऑफ पेपर वन को ही सबसे पहले दिया। लीगल आपका मोर और लेस कंप्लीटेड था, वन बिकॉज इंश्योरेंस लॉज वर कंप्लीटेड बिकॉज यू वर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग एंड यू वर इन द यस वर्ल्ड ऑफ insurance itself, so they come naturally to you. And then of course you have initially prepared for judiciary and then you studied in law school, so you had a strong hold on legal subjects. बट मैं ये मानती हूँ कि जो आपने स्कूल में किया, मतलब लॉ स्कूल के अंदर जो आपने पढ़ाई करी और जो आप कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करते हो, ये दो बहुत अलग चीजें हैं। यस They are not फॉर the श्योर। same. So were there any subjects that you think at least in the legal syllabus which were challenging for you?
मैम, क्योंकि I had prepared for IPC Hmm. and Indian Evidence Act and uh, CRPC. Correct. But in course of time it was changed. तो मैंने याद किए थे उस हिसाब से सारी Correct. पिछले वाले प्रोविजंस के हिसाब से, एंड देन यू हैव न्यू एक्ट. तो Correct. यू went through lot of confusion while preparing for new acts, क्योंकि Hmm. वो मन में आपके फिट हो जाता है while giving for judiciary or doing MCQ. And Correct. when you are preparing with because BNS BSA is somehow good, but as compared to Indian Evidence Act, but in IPC it has major overhaul because Correct. sections पूरे चेंज हो गए हैं ऊपर से नीचे तक. And the तो new offenses are हाँ also हाँ added. हाँ हाँ, न्यू ऑफेंसेस आर ऑल्सो एडेड. न्यू ऑफेंसेस का तो यू गो थ्रू कंपेटिटिव एनालिसिस, यू कैन एनालाइज इट. Correct. बट if you have provision based question or any other ancillary thing like one liner is added in certain provisions, then you have lot of confusion in that. So I find challenging in these provisions. What was your strategy when it comes to learning numbers, especially in the legal? So you have a lot of limitation periods across, various legislations, and then you have indexes of every legislation which is a part of your syllabus, at least the codified laws. Yes, And like I say, that numbers, punishments, and anything that is numerical in nature, it's quite difficult to retain and remember it. What was your strategy to learn and retain these indexes, the provision numbers, and the limitation periods? मैम, टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट गो थ्रू, मतलब रटना की प्रोविजन में ये है तो ये है, क्योंकि दिस वाज नॉट फ्रूटफुल फॉर मी, क्योंकि Hmm. मैं अभी पढ़ता था एंड द नेक्स्ट डे आई फॉरगेट. तो Correct. आई स्ट्रेटेजाइज अकॉर्डिंग टू चैप्टर कि Hmm. इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू डोंट गेट एग्जैक्ट रेप्लिका के हर एक प्रोविजन से. यू हैव योर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. Correct. देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड somehow you may guess work, क्योंकि आप अगर चैप्टर से जा रहे हो कि पर्टिकुलर चैप्टर 11 इज मोटर व्हीकल एक्ट, Hmm. then it is third party insurance. And if there is any we have you have four or five options with you. Hmm. So if you have provisions falling into those chapters, then Hmm. you can take a calculated guess Hmm. in during exam period. But during preparation I used to read make shortcuts codes कि आप ये मैंने आई वाज यूज्ड टू मेकिंग कोड्स ऑफ प्रोविजन कि अल्फाबेटिकली नंबरिंग. Correct. Mnemonics and हाँ, the निमोनिक्स various एंड scientific techniques you हाँ have. Yes. So, एंड hmm. यस मैम. No, no, no. Please finish it off if नहीं, there's any. कंप्लीट. Okay. So that is that. So I just wanted to, like you mentioned, that summary sheets were very handy to you when it comes to revision. Was there any other feature of at least the iExamB course that you found to be extremely helpful other than the summary sheets? Any resource that you must have used for a specific legislation or anything else? मैम, the most and the best thing of Make a Big Legal is a timely guidance and mentorship sessions, Hmm. which मतलब आप जब अप्लाई करते हो कि आई वांट सेशन विद इन 24 आवर, इट इज असाइंड विथ यू. Hmm. एंड इन ड्यूरिंग माय वर्क जॉब आप ऐसा होता है कि यू हैव नो टाइम टू पॉन्डर ओवर मैनी रिसोर्सेज एट द सेम टाइम. Correct. तो अगर इफ यू आर अगर आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर लॉ और एनी अदर सब्जेक्ट, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, एंड आई फाउंड एनी डिफिकल्टी इन, मतलब क्या नहीं पढ़ना चाहिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो Correct. मेगा बिल लीगल, अंजलि मैम, नेहा मैम, Yeah. you were very much supporting and motivating. So it was the best part. Or the second thing is the mock. The Hmm. level of mock of I exam B is so much, मतलब काफी अच्छा जा है. And the best thing is it gives you explanation in after your answer. You have attempted your mock. Then Correct. when you are analyzing your mocks, the most important thing is कि आपको explanation अच्छे मिल जाए वहां पे. And not only explanation to those question only, the related provisions, ताकि Correct. ये दोनों चीज वहीं पे आपके प्रिपेयर हो गए. This is the best thing. How many mocks did you give, Divyam? मैम, इन NICL prelims
तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने 6-7 मॉक दिए थे। हम्म और NICL मेंस में आई हैड अ टाइम, तो आई गिव अप टू 10 मॉक्स। हम्म And so that, so see, NICL AO exam is objective in nature. Yes, ma'am. And this is one of my strategies. I mean, I say it time and again, intro class होगा, one-on-one session होता है, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ that if it's an objective paper, solve as many objective questions as you can. Yes, ma'am. Because it's one thing to read a Bayer Act and learn the Bayer Act, which is of course essential, it's preliminary. लेकिन जो आप एक MCQ सॉल्व करके either through mock test or through the MCQ booklets that iExam provides you, you are able to cover the questions which otherwise you would have left. Yes, या ma'am. फिर आपने अगर पढ़ा भी है, आपने शायद उस पर इतना एम्फोसिस नहीं डाला या उसको इतने ढंग से याद नहीं किया, तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं या वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके इन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करके कवर हो जाते हैं. सो Yes, ma'am. are you of the same thinking, like did you also stress a lot on the objective questions, या फिर जो resources थे अलग अलग, जैसे चैप्टर टेस्ट थे, सेक्शन टेस्ट थे, एमसीक्यू बुकलेट्स थी, क्या आपने इनको भी कवर किया था लीगल के लिए? मैम, लीगल के लिए मैंने इसे कवर किया था फॉर NICL मेंस इन 1 or 2 weeks, हम्म. इन इनिशियल 1 or 2 weeks ओनली, क्योंकि करेक्ट. मुझे अदर भी सब्जेक्ट्स मुझे करने थे और मेरे पास टाइम कम था। तो आई हम्म. प्रेफर टू गो फॉर ओवरऑल मॉक, फुल टाइम हाँ. मॉक्स। तो हम्म। मतलब आपने लेकिन लीगल के लिए कोई भी एमसीक्यूज एज सच प्रैक्टिस नहीं किए थे अपार्ट फ्रॉम मॉक्स? मॉक्स तो आपने दिया था जो आपने मुझे बताया, हाँ, उसके मैंने किया था स्पेशली फॉर कॉर्पोरेट लॉ, अच्छा. बिकॉज व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी यू डोंट हैव द कॉर्पोरेट. कॉर्पोरेट लॉ पेपर विथ करेक्ट. the या. syllabus assigned. But in IBPS SO and other law officer exam, you have corporate law. और corporate law, to be honest, मैंने कॉलेज में उतने ध्यान से पढ़ा नहीं था। तो आई फेल्ट कि going through MCQ practicing, you can learn and remember those provisions while solving MCQs, subjective करेक्ट. MCQs, subjective. Yeah. So, see, this is what I was also talking about. Like you correctly pointed out, majority of legal students of legal background, unless and until वो corporate law firm में नहीं है या फिर उन्होंने वो उसमें major नहीं कर रखा है, corporate laws is one of the biggest challenges that a lot of students face. तो स्पेशली कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट है भी बहुत बड़ा. तो Yes, आपने ma'am. कंपनीज एक्ट को कैसे, मतलब व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी इन सॉर्ट ऑफ कंप्लीटिंग कंपनीज एक्ट इन सच अ टाइम बाउंड मैनर? मैम, summary sheets हम्म. and उसमें कुछ जो प्रोविजन दैट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई यूज टू रेफर बेयर एक्ट्स, ओरिजिनल बेयर एक्ट्स ऑफ ओके. कंपनी लॉज, करेक्ट. के इनकॉर्पोरेशन वाला पार्ट एंड हम्म. वाइंडिंग अप वाटरफॉल करेक्ट. एग्रीमेंट, दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट। so I referred बेयर एक्ट for more clarity and videos, of course videos करेक्ट. from YouTube and other sources. हम्म. And the most important that you should solve MCQs so हम्म. that it would retain with you for long term. So you must have also, okay, coming to now, understood the strategy and how you prepared for quants and how do you prepare for legal, what was your strategy and all of that. Coming to interview rounds, you have given a mock interview with iExam. Yes, Then ma'am. you sat for an actual interview, with the panel of NICL AO. What was your experience with interview? What kind of questions were asked? Ma'am, the panel was of 7 members, Hmm. and when I way back I gave in IBPS SO, there were only 5 members. तो Correct. आप कितने भी प्रिपेयर हो, when you enter your interview room and you see 7 person and 7 senior most person in front of you, थोड़ी सी आपको nervousness you Acha. feel at Correct. that time. But the best thing is कि I have given two, three. I have also given IBPS SO law interview this time. इस ईयर Correct. भी मैंने दिया है। Yes. तो Yes. when you give interviews for government exams, the interview panel mostly they are supportive. Supportive in the way it makes you comfortable Correct. while sitting and interacting with you. क्योंकि Correct. they want to check your personality, your confidence at that point of time. क्योंकि knowledge तो मेंस में चेक हो चुकी है Correct. already. Correct. So when I gave mock interview with I exam B, so Prachi ma'am, especially Prachi ma'am, told me, क्योंकि I was totally occupied with three assumptions.
कि ये पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, अगर वो उन्होंने ऐसा पूछ लिया, अगर मेरे जवाब से कुछ और निकाल दिया, तो बहुत सारे दिमाग में चल रहे थे तभी मेरे। करेक्ट। तो प्राची मैम पॉइंटेड आउट कि दैट you have your knowledge, you have your personality, but you will spoil your interview because of your करेक्ट। pre-assumptions. So you करेक्ट। should avoid during हम्म। real interview. So it was running in back of my mind during my interview. तो एंड इन ड्यूरिंग उन्होंने इंट्रो पूछा आप अपने बारे में बताने के लिए, हाँ। तो मैंने कॉलेज बैकग्राउंड जो होती है सबकी एक बनी रहती है पहले से, तो आई एक्सप्रेस दैट टाइम। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले पूछा, उन्होंने गैप ईयर है मेरा क्योंकि, हम्म। तो आई एक्सप्लेन माई गैप ईयर, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एंड इट टेक टाइम। हम्म। तो एंड आफ्टर उन्होंने पूछा कि नाउ करेंटली यू आर वर्किंग, बिकॉज इन बायोडाटा आई हैव मेंशन्ड इट कि आई वाज करेंटली वर्किंग। हम्म। तो उसमें तो गैप ईयर नहीं हुआ, बट सी द चेयरमैन वाज लेडी एंड हम्म। मैम ऑनरेबल मैम आस्क्ड अबाउट माय जॉब प्रोफाइल, करेक्ट। what I am was doing. हम्म। And after then sir, the next she passes on to another sir. He asked about the laws which I was practicing in my office, करेक्ट। कि हाँ कि इसे नॉलेज है कि नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि बस काम कर कर रहे ले। होते हैं, ये नॉट बेसिक्स भी क्लियर नहीं होते हैं। हम्म। तो उन्होंने उससे रिलेटेड पूछा, ही वांटेड टू, उसके बाद कौन फिर कौन से लॉज से पूछा था उन्होंने, बिकॉज आप उन्होंने, इंश्योरेंस में ही काम कर रहे हाँ थे उस टाइम पे। उन्होंने इंश्योरेंस लॉज में जो अमेंडमेंट आए हैं स्पेशली अभी करेक्ट। 2020 में, हम्म। तो उस पे ज्यादा उन्होंने फोकस किया था कि क्या क्या होना चाहिए, क्यों लाया, क्योंकि वो ही वाज आल्सो आस्किंग द रेशियो एंड रैशनल बिहाइंड अमेंडमेंट्स। करेक्ट। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट, यस। हाँ ऑब्जेक्टिव क्यों लाया गया, तो ही वाज, मतलब वो चाह रहे थे कि मैं कैसे सब्सटेंशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस फील्ड में हूँ। एंड आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर हाई कोर्ट केसेस इन छत्तीसगढ़। हम्म। तो अपील मैटर में काफी ज्यादा थोड़ा टेक्निकलिटीज होती हैं, या हम्म। यू प्रिफर, तो उन्होंने अपील में ग्राउंड्स पूछे कि आप किस ग्राउंड पे आपकी कंपनी जा रही है, आप हम्म। उसे कैसे टैकल करते हो। एंड अदर्स उन्होंने फिर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पूछा, थोड़ी सी प्रोविजंस कि इंश्योरेंस वाली क्या चीज होती है, किस कॉन्ट्रैक्ट लॉ से गवर्न होती है, पार्टिकुलरली इंडेमनिटी यू नो। करेक्ट। करेक्ट। तो फिर उन्होंने थोड़ी सी डिफरेंस पूछी, इंडेमनिटी गारंटी वाली चीजें। और ये हाँ सीपीसी के उन्होंने प्रोविजंस पूछी, रिवीजन, क्योंकि वी फाइल रिवीजन अंडर करेक्ट। सेक्शन 115। या। एंड ऑल्सो वो अपील वाली पूछी कि टाइमलाइन कितनी है सीपीसी में, कितनी है, और मोटर व्हीकल एक्ट में कितनी है। तो सीपीसी में वो पूछने से मतलब थोड़ा कंफ्यूज कर रहे थे कि सीपीसी में टाइमलाइंस तो है ही नहीं, हम्म। ऐसे सच की अपील आप कहाँ जाओगे, क्योंकि वो 96 में अपील की प्रोविजंस है। हम्म। तो उन्होंने लिमिटेशन वाली पूछी कि हाँ लिमिटेशन एक्ट से उन्होंने पूछा, क्योंकि जो मोटर व्हीकल एक्ट में है सेक्शन 5 वाली बात, हम्म। कि आप कंडोन कैसे करते हैं वो डिले, वहां पे क्या वो अपील भी कंडोन होता है या सूट भी कंडोन होते हैं। तो मतलब उन्होंने मतलब ज्यादा लॉ में नहीं किया, क्योंकि आई वॉज वर्किंग, तो मेरे जॉब प्रोफाइल से जितने लॉज अप्लाई होते हैं उनके आसपास उन्होंने पूछा सारा कुछ। सो ये आपका इंटरव्यू ऑलमोस्ट कितने टाइम तक चला था दिव्यम? मैम 15 मिनट्स। 15 डॉट minutes. So the डॉट questions were very quick, huh? They were not very हाँ elaborate, क्योंकि आपने जो questions मुझे बताए, otherwise usually they ask you a lot of follow-up questions, but as मैम such. एक्चुअली द इंटरव्यू पैनल वाज लॉजिकल, क्योंकि उन्होंने पूछा कि व्हाई यू वांट गवर्नमेंट जॉब। तो हम्म। इट इज वेल अंडरस्टूड क्यों किसे चाहिए स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो व्हेन करेक्ट। आई सेड स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, तो उन्होंने अच्छा सिक्योरिटी का, तो उन्होंने स्माइल करके बोला। उस पे कई लोग होते हैं कि मतलब ग्रिल करते हैं, तो देवर, आई फाइंड देवर लॉजिकल, क्वाइट लॉजिकल अबाउट दिस थिंग। एंड इन लॉ क्वेश्चन आई डिडंट टेक मच टाइम टू आंसर, क्योंकि आई एम डूइंग इन दैट सेक्टर ओनली। हम्म। तो ऐसे चला था। सो योर, हाँ यू नो, ऑफ कोर्स व्हेन यू आर गिविंग एन इंटरव्यू, लाइक यू सेड कि आप कितने भी इंटरव्यूज देते हो, बट देर इज ऑलवेज दिस नर्वसनेस, you know, inside you, right? You always feel nervous a little bit. So sometimes the things that you know really well, when the question is being asked, जो आप normally बता पाते हो, sometimes it just slips your mind and you यस just मैम। stumble on that particular question. तो आपके साथ में ऐसे कोई questions पे हुआ था जहां पर आपको कोई चीज आती थी पर आपको नहीं आ रही? मैम थोड़े से वो अमेंडमेंट से रिलेटेड उन्होंने पूछा था, जो मुझे तभी स्ट्राइक नहीं कर रही थी बैकग्राउंड ऑफ माइंड। लेकिन हम्म। मेरे सबसे बेस्ट थिंग है कि व्हेन आई यूज टू मेक आई कांटेक्ट विद द पैनल मेंबर, देन हम्म। नर्वसनेस आई फील,
this Hmm. is my personal opinion, totally subjective to my experience only. Correct. कि when I make an eye contact with the interview panel, तो nervousness मेरी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि Correct. their expression is like कि वो जानना चाहते हैं आपसे, not कि they are They want to going know. to punish you Correct. और आपको भगा देंगे वहां से। तो Hmm. मुझे ये काफी अच्छा लगता है कि यू मेक आई कांटेक्ट एंड यू फॉरगेट अबाउट योर नर्वसनेस। तो उस Hmm. समय मैंने थोड़ा सा पॉज लिया था, तो बट उन्होंने आगे से ही उसको सप्लीमेंट कर दिया था, तो मुझे याद आ गया तभी क्वेश्चन, तो मैंने बता दिया। So this was your interview sort of experience. I want to ask you now just my last question to you. अच्छा। We started off by saying that it's going to be a 15-minute interview, but it was great talking with you. But yes, one last question. So there are so many aspirants who are going to watch you right now, and I'm sure that they're watching you. What is that one, or maybe however many advices that you can give to these aspirants when it comes यस to मैम। preparation, when it comes to strategy, when it comes to interview, जो भी आपको लगता है कि ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये चीजें वो मस्ट है जो आपको करना चाहिए. What is that one advice that you'd like to give? मैम फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस आफ्टर गिविंग दिस एग्जामिनेशन एंड interview, I realized the most important thing is the competitive exams demand you your mental preparation, how you are mentally prepared. It is more about psychological than a physical labor, like कि Correct. आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि हर दिन अच्छा नहीं जाता। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको, फीलिंग फ्रॉम माई हर्ट ऑफ फीलिंग, क्योंकि कभी कभी मुझे 7 बज जाते थे ऑफिस से आते आते, तो देन यू हैव ओनली 1 आवर और 2 आवर लेफ्ट विथ यू टू स्टडी। तो कभी कभी यू फील डिमोटिवेटेड कि अरे यार अब तो 2 ही घंटे बचे हैं, फिर अब समय धीरे धीरे पास आ रहा है, तो कैसे होगा। तो Hmm. आई यूज टू फील कि नहीं, मुझे कल जो आएगा दिन उसमें ज्यादा अच्छा करना है, कल मैं ऑफिस में थोड़ा सा ज्यादा समय निकालूंगा सो दैट आई कंपनसेट माई पास्ट डेज। Correct. तो ये चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और राइट स्ट्रेटेजी में सबसे बेस्ट होती है कि आपके पास रिसोर्सेस काफी सारे हैं, यू हैव वास्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, यूट्यूब वीडियोस, फ्री वीडियोस। तो कई बार ये होता है कि ये भी देख लूं वो भी देख लूं, कुछ उससे निकल जाए, नहीं, यू शुड स्टडी वन थिंग ओनली बट 10 टाइम्स, इट इज Correct. मोर इम्पोर्टेंट। दिस इज द टू थिंग, क्योंकि मेंटेलिटी वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि वही अगर आप डिमोटिवेटेड फील करोगे तो आप 8 घंटे भी बैठ लगातार पढ़ जाओगे, तो वो एनीथिंग वुड नॉट बी रिटेन इन योर माइंड। Correct. So that was a wonderful guidance. I also keep telling students that it's this exam is more about any competitive exam for that matter of fact is something that challenges your inner thoughts. अगर आप अपने दिमाग को और थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो तो आपका मोस्टली सारा काम हो जाएगा. डिसिप्लिन इज मोर इम्पॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट, मोटिवेशन कम्स एंड गोज. It's always up and down, the scale is like that, but you have to be consistent regardless of that. So that was a great advice. Thank you so much, Divyam, for coming here, talking to us, and talking with all the aspirants who are going to watch you. I wish you all the best for your future, and I'm sure that you'll touch great heights. And I would love to see you touching those great heights and keep coming here back again and again and just share your यस मैम। experiences with us. Um, it was lovely थैंक यू talking सो to मच you मैम, and एंड I would also like to extend my gratitude to iExam B team during thank my this journey. thank you so much. And that's it. That's it from my end. And I would love to talk to you again sometime. We'll hold another meeting or so. Okay, ma'am. Thank Okay, you okay. so much. Thank you, ma'am.